Who among the following Chola rulers converted the Bay of Bengal into Chola Lake? तो राजेंद्र फर्स्ट ने राजेंद्र चोला फर्स्ट led naval expedition against Sri Vijay Empire 125 AD captured Sumatra, Malwa and Malay and Java. मलय को सिंगापुर कहते थे and controlled shipping routes. This dominance earned the title Bay of Bengal as Chola Lake. Raja first expanded to Sri Lanka, led naval foundation Adhiraj, no such acha. Kultonga focused on administrative reform and trade डिप्लोमेसी. इन्होंने 72 लोगों को भेजा था. राजेंद्र built गंगई कोंडा चोलापुरम and assumed गंगई कोंडा चोलन आफ्टर विक्ट्री ओवर पाल किंग महिपाल पे विजय के बाद इनको कहा गया गंगई कोंडा चोलन. हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगई कोंडा चोलापुरम? राजेंद्र चोला फर्स्ट रीन 1014 to 1044 AD, son of Raja first, established Gangai Konda Cholapuram after his victorious campaign up to Ganga river, defeating Pal ruler Mahipal. He assumed the title Gangai Konda Chola. ठीक है. Raja first built Brihadeshwar temple at Tanjavur. Rajadhiraj, later Chola king, ruled after Rajendra first. ठीक है. Who among the following Chola ruler is credited to have built a huge artificial lake known as Chola Gangam? Rajendra first ने. Gangam Poneri was an artificial lake constructed by Rajendra first to commemorate his northern victories. It symbolizes his military achievements and water management ability. Raja first focused on temples and military conquest. Rajadhiraj focused on Deccan wars. Raja second reigned later built Aritvateshwar temple. Which Chola king started naval army? तो राजा फर्स्ट. तो इसके बाद इन्होंने श्रीलंका और मालदीव पे कब्जा किया. राजा was first Indian monarch to create a systematic naval force. He used it for invading Sri Lanka, established supremacy over Maldives, protecting maritime trade. Rajendra Chola expanded naval activity to सुमात्रा जावा और वहाँ उधर. राजा सेकेंड आफ्टर naval dominance had peaked. उसके बाद इन्होंने राज किया. Name the Chola king who conquered the northern part of Sri Lanka. Raja first invaded Lanka, captured Anuradhapura in the north. This marked the beginning of Chola control in the island. His son Rajendra first completed the conquest. राजा फर्स्ट ने शुरुआत की थी. राजेंद्र फर्स्ट ने साउथर्न पार्ट को भी कब्जा किया. Pranataka first fought against Pandya and Rashtrakuta. Aditya first, earlier ruler. Which of the Chola king conquered Ceylon? Rajendra first completed the conquest of Sri Lanka. Ceylon. राजेंद्र फर्स्ट ने मतलब सीलोन यानी कि श्रीलंका को पूरा कब्जा किया. राजा फर्स्ट ने शुरू किया था और राजेंद्र फर्स्ट ने पूरा कब्जा किया. He defeated Mahendra V, annexed the entire Iceland and integrated into Chola Empire. आदित्य फर्स्ट नहीं. राजा वन captured only northern Lanka. Vijayala founded Chola dynasty. तंजावुर को इन्होंने राजधानी बनाई थी. Who was the Chola monarch who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to the Sinhala prince? तो Kulotunga first. During Kulotunga first reign, Vijay Bahu of Ceylon declared independence. Kulotunga accepted it peacefully and married his daughter to Sinhala prince Veera Perumal, showing diplomatic maturity. कुलोटुंगा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया किससे? विजय बाहु के लड़के से शायद. सिंहाला प्रिंस
वीरा पेरुमल से शोइंग डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी। ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट कंक्वर्ड श्रीलंका बाय फोर्स। अधिराजेंद्र reigned briefly. राजाधिराज फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन्स। कुलटुंगा फर्स्ट ने अपनी बेटी की शादी की। वी हैव मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट चोला देन देयर प्रेडिसेसर्स। द चोला रूलर adopted practice of having inscription written on the walls of temples। सही है। Cholas extensively used temple walls for inscription, chronically wars, donation, village assemblies, and land grants. This practice, started by Raja first, gives rich primary data. मैच द फॉलोइंग करेक्टली। अब देखिए इरापट्टी और घटिका। अच्छा देखिए इरापट्टी लैंड रेवेन्यू सेट असाइड फॉर विलेज टैंक मेंटेनेंस। इरी मतलब होता है टैंक। तमिल में इरी को टैंक कहते हैं। तनियूर ए लार्ज विलेज आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी। घटिका टेम्पल लिंक्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली अंडर पल्लव कांचीपुरम घटिका। तो ईरापट्टी और घटिका। तनियूर जो है वो विलेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड। तो नाना देशिस एंड मनीग्राम। नाना देशिस वेर पावरफुल मर्चेंट गिल्ड engaged in foreign trade during Chola and Hoysala periods. The term means people from other land. Nana Desis. They had strong overseas trade link with Southeast Asia and China. Nana Desis ट्रेड करते थे। मनीग्राम was another inter-regional trade guild. These were often associated with Buddhist traders active across South India and abroad. MoneyGram. Sreni, general terms of guilds of artisan and traders, not always connected to foreign trade. Nagaram, ये urban merchant group that operated locally within South Indian cities, वो नगरम। Nana Deshis were known for their inscription in Tamil and Sanskrit, and functioned like modern transnational corporation, often funding temples and local infrastructure. नाना देशिस और मनीग्राम भी साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिस्ट से लिंकेज अधिक था। विच वन अमंग द ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशियंट इंडिया was on trade route connecting Kalyan to with Vengi? Which one of the following trade center of ancient India was on the trade route connecting Kalyan with Vengi? तो टगरा क्या है? मॉडर्न डे तीर in Maharashtra was a major inland trade center in the Satvahan period, and later it connected Kalyan port in the west coast to Vengi, Andhra region. कल्याण पोर्ट यहाँ अपने मालाबार कोस्ट के पास था। कल्याण पोर्ट। श्रीपुर रिलीजियस सेंटर। त्रिपुरी कैपिटल ऑफ कालाचुरी डायनेस्टी, सेंट्रल इंडिया। ताम्रलिप्ति मेजर पोर्ट इन बंगाल, ईस्टर्न सीबोर्ड। वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो पुलकेशिन सेकेंड। इन्होंने हराया था किसको? अच्छा देखिए पुलकेशिन सेकेंड 610 to 642 AD was the most powerful ruler of बादामी चालुक्य. He defeated हर्षवर्धन, resisted पल्लवा and expanded control from नर्मदा to कावेरी. नर्मदा से लेके कावेरी तक इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। His achievement were recorded in Aihole inscription कर्नाटक में written by his court poet रवि कीर्ति। विक्रमादित्य ये चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता था। विक्रमादित्य विक्रम 57 BC शक कुशन ने वो चालू किया, ये 78 AD। पुलकेशिन फर्स्ट फाउंडर ऑफ डायनेस्टी चालुक्य का फाउंडर। Which of the following dynasty frequently assigned to the ladies high ranking
पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो चालुक्य क्या करते थे? इंकरेज्ड वोमेन्स पॉलिटिकल रोल। विजय भत्तरिका, क्वीन ऑफ चंद्रादित्य, issued copper plates, administrated villages and was known for literary ability। मतलब ये लोग महिलाओं को क्या करते थे? आगे बढ़ाते थे। चोला, दो वुमेन had respect but administrative roles were limited। पाला focused on monastic patronage, not women's administrative participation। सेना, conservative brahmanical system, limited women's role। Where was the capital of Chalukya located? Vatapi। Vatapi, modern day Badami, Karnataka, was the capital of early Chalukya, Badami, 6th to 8th century C। Pulkesin first established this capital and Pulkesin second ruled from here। Sravasti, ancient Buddhist center, Kanchi, Pallav dynasty, पल्लवों का कैपिटल था कांची। कन्नौज हर्षवर्धन का कैपिटल, आगे चल के प्रतिहारों का कैपिटल बना। पाल भी लड़ते थे इसी के लिए, राष्ट्रकूट भी लड़ते थे। द नेम ऑफ पोएट कालिदास इज मेंशन्ड इन द ऐहोल इंस्क्रिप्शन। कालिदास किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के वो थे। ऐहोल इंस्क्रिप्शन कंपोज बाय रवि कीर्ति प्रेजेस पुलकेशिन सेकंड एंड मेक्स कल्चरल रेफरेंस इंक्लूडिंग कालिदास एंड भारवी। दिस इंस्क्रिप्शन इज ए मेजर सोर्स ऑफ डेक्कन हिस्ट्री। अलाहाबाद पिलर समुद्रगुप्त के लिए है। अलापादू ग्रांट नहीं। हनुमान कोंडा बिलोंग्स टू ककतिया पीरियड। अच्छा, कालिदास के बारे में, चंद्रगुप्त के टाइम में थे। संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट कालिदास फाइंड मेंशन इन ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड। अच्छा, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिर भोज बिलोंग्स टू प्रतिहारा किंग, मेंशंस मिलिट्री फीट। करमदंद शिवलिंग इंस्क्रिप्शन गुप्ता एरा में। मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन रिफर टू चंद्रगुप्त सेकंड अचीवमेंट। Which of the following kings did send 2 naval expedition to Ceylon in 642 AD? तो नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने भेजा था। नरसिंहवर्मन फर्स्ट ऑफ पल्लव डायनेस्टी was also known as महामल। He captured Vatapi, capital of Chalukya, यानी कि बादामी कर्नाटक में, and sent 2 naval expedition to Sri Lanka to help Manawamma, a Sri Lankan prince, reclaim the throne। मनव अम्मा को वो करने के लिए, मनव अम्मा। राजा से नवल कैंपेन but in 10th century। कीर्तिवर्मन फर्स्ट चालुक्य किंग नॉट लिंक टू सिलोन। जय सिन्हा फर्स्ट not historically recorded for this event। Mahabalipuram's Mancharath and Shore temple are attributed to Narasimhavarman first reign। The term Yavan Priya mentioned in ancient Sanskrit text denoted pepper। Yavan means Greeks, Romans, and Priya means beloved। Indian black pepper was a highly valued commodity in Roman cuisine, leading to the Sanskrit term Yaman Priya, the favorite of Yaman, Greek, Roman। Fine Indian muslin, highly traded but referred as mulmul or muslin। Ivory exported but not known by this term। Themselves for performance, no authentic historical term support this। Pliny the Elder lamented how Rome was draining wealth to India due to spice imports। Mentioned in Periplus of the Erythraean Sea। मतलब भारी कमाई करते थे ये लोग, काली मिर्च मतलब वो करके। हल्बी इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज फैमिली? आर्यन। हल्बी इज ए इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन इन बस्तर छत्तीसगढ़ and adjoining areas। Is a transitional dialect between Odia and Marathi, written in Odia and Devanagari script। हल्बी ये आर्यन है। मुंदरी मुंडा लैंग्वेज और एस्ट्रो एशियाटिक संताली
एस्ट्रोएशियाटिक, द्रविडियन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। हल्बी क्या है? आर्यन है। Tolpakiyam text deal with grammar and poetry. Tolpakiyam is the oldest surviving Tamil literary work dated to 2nd century BC, written by Tolkappiyar, a disciple of Agast. It is a treatise of Tamil grammar and poetics, divided into 3 parts: Ijhuttu, letters, Kol, words, and Porul, meaning and concepts. Ijhuttu, Kol, and Porul. ठीक है। The Sangam text Tolpakiyam is a work on grammar and poem. Though it covers poetic convention, its primary focus is grammatical rules of classical Tamil. It is considered foundation of Tamil linguistic tradition. In Sangam literature, Tolpakiyam is a text of Tamil grammar. Repeat. The author of Seal Paddikaram was Ilango Adigal, a Jain monk and brother of Chera king Senguttuvan, wrote Seal Paddikaram, one of the 5 great epics of Tamil literature. Seal Paddikam किसने? इलंगो अधिकल ने लिखा. Narrates the tragic tale of Kannagi and Kovalan set in Madurai and Puhur. Parmara Rajput dynasty in central India. Karikal Sangam Chola ruler. Vishnu Swami associated with Vaishnavism. अब देखिए, थिरुकुर्रल क्या था? फिलोसफी था. रिटन बाय थिरुवल्लुर. It contains 1330 couplets divided to Aram, virtue, Porul, wealth, and Inbam, love, known for Tamil Ved. Tolpakiyam grammar. Seal Paddikaram love story. Adgal ने लिखा. Love, betrayal and justice. Mani Melai merchant story. Sequel of Seal Paddikaram by Sattanar, merchant story. Focus on Kannagi's daughter turns Buddhist. Reflect Buddhist philosophy. The collection of writings of the Saviet Sants is considered as 5th Ved. What is its name? Tirumurai. Tirumurai is a 12-part anthology of Shiva devotional hymns. Anthology. Tirumurai is a 12-part anthology of Shiva devotional hymns composed between 6th to 11th century CE. Main authors Appar, Sambadar, Sundarar और Manikavachkar. It's revered as Tamil Marai, Tamil Ved by Saviets. Tolpakiyam grammar text. Silapaddikam epic poem, secular narrative. Manickmakalai बुद्धिस्ट फिलोसफिकल वर्क. ये जो है तिरुमुराई जो है वेद समझ लीजिए. बेसिस ऑफ शैव सिद्धांत. इन्फ्लुएंस सीन इन टेम्पल रिचुअल्स एंड भक्ति मूवमेंट.
हाउ मेनी अलवर्स एंड नयनर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन? तो 12 अलवर हैं और 63 नयनर्स हैं. अलवर वेयर Vashvanite Sant poems known for devotional hymns to Lord Vishnu. Traditionally, there are 12 alvars, including Andal, the only female alvar. और Nainar were Shiv Sant poet devoted to Lord Shiv, totaling 63. तो अलवर 12 और नयनर 63. Which one of the following statement about Sangam literature in ancient India, South India is correct? The societal classification of Vern was known to Sangam poets. सही है. Sangam literature reflects social structure including Vern and Kul, material prosperity, heroism, ethic, magic and nature worship. सही है. Sangam poems are rich in agriculture, trade, jewelry and urban life. नो रेफरेंस ऑफ वेरियर एथिक. नहीं भाई, वेरियर वेल्योर इज सेंट्रल थीम. पूरम. मैजिकल फोर्स इज इरेशनल. नहीं. सम पोएम रिगार्ड नेचुरल फोर्सेज एज मैजिकल. फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ विच एंशियंट साइट हैज इंफॉर्मेशन बीन गैदर्ड रिगार्डिंग ब्रिस्क ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम ड्यूरिंग अर्ली क्रिश्चियन era? तो Arikamedu near Pondicherry was a major Indo-Roman trade port. First century BC to second century CE. आर्कियोलॉजिकल फाइंड के अम्फोरा जार्स मिले. रोमन कॉइन्स अगस्टस सीजियर और टिबेरियस राउलेटेड वेयर और ग्लास बीड्स मिले. मदुरई संगम का कैपिटल था. ताम्रलिप्ति मेजर ईस्टर्न पोर्ट. वेस्ट बंगाल में टोंडी संगम ट्रेड पोर्ट. The foremost Indo-Roman trading station in eastern India is Arikamedu. Despite being South India, Arikamedu was the foremost Indo-Roman trading site, mentioned in Peripulus of Arthurian Sea as Poduke. Tamluk, also known as Tamrlipti, ये यहाँ वेस्ट बंगाल में. राजगीर इनलैंड सिटी. बुद्धिस्ट साइट बागीरी. ऐसा कुछ नहीं. Which port was known as Poduke in the author of the Peripulus of Arthurian Sea? तो Arikamedu. Poduke, Arikamedu, mentioned in Peripulus, 1st century CE. The text detailed maritime trade between India and Rome, particularly from Mujiris, Poduke and बेरी जगह. ताम्रलिप्ति बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिला है. कोरकई पर्ल फिशिंग पोर्ट ऑफ पांड्या किंगडम. कोरकई. बारबेरिकम पोर्ट इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. बारबेरिकम. The Roman settlement has been found in Arikamedu. Roman style artifacts excavated include wine amphor, Roman coin, intaglios or glassware. These prove settlements and warehouses existed, perhaps from Roman traders or intermediaries. सही है. कालीबंगन और रंगपुर इंडस वैली साइट्स हैं. सतारा नहीं. अम्फोरा जार इज ए टाल डबल हैंडल जार. ऐसे सुराही टाइप का है, इसमें डबल हैंडल लग गया. अम्फोरा टाल सिरामिक जार विथ 2 हैंडल्स एंड नैरो नेक, यूज्ड बाय ग्रीक एंड रोमन्स टू स्टोर वाइन, ऑलिव ऑयल या गैरम फिश सॉस. मेनी एम्फोरे वेयर डिस्कवर्ड इन अरिकामेडो, इंडिकेटिंग रोमन ट्रेड प्रेजेंस. परफोरेटेड जार नहीं, यूज्ड इन इंडियन डोमेस्टिक यूटिलिटी. पेंटेड ग्रे जार नॉर्थ इंडिया. पेंटेड ग्रे जार था, इंडस का नहीं था, ये वैदिक पीरियड का था. इंडस का रेड और ये था रेड एंड ब्लैक था. ब्लैक एंड रेड वेयर कैलकोलिथिक इंडिया. भक्ति मूवमेंट 12 अलवर और 63 नैनर. संगम लिटरेचर, सोशल स्ट्रक्चर, हीरोइज्म, नेचर, मटेरियलिज्म, इंडो रोमन ट्रेड, अरिकामेडू, पोडिके, एम्फोरे, कॉइन, पेरिप्लस. आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, अर्ली ग्लोबलाइजेशन थ्रू साउथ इंडियन पोर्ट्स. ठीक है. Which of the following dynasties is not mentioned in the Sangam literature? Kadam. Sangam literature extensively mentioned 3 major Tamil dynasties: Chola, Chera, Pandya. Kadam dynasty, though powerful in Karnataka Banavasi region in 4th to 6th century CE, emerged after the Sangam age, लेकिन mention नहीं है. Chera mentioned in Porunanuru, no for trade with the west. Chola prominent in many Sangam texts like Pathinapallai. Pandya, capital at Madurai, known for patronage of Sangam poets. Pandya सबसे ज़्यादा रूल करने वाले थे पांड्या. Which one of the following was not a ruling dynasty in Tamil
tree during the Sangam age. Pallavas rose in 3rd century CE. After the Sangam period, Sangam age was dominated by Chola Chera Pandya. Rules in Tamilkam region during Sangam period. Pallav में नहीं. Religious anthology Kural, composed in which language? Tamil. Thirukural, written by Thiruvallur, a classic Tamil text consisting of 130 couplets. It is called the Tamil Ved, also referred as Muppal, and it's divided into Aram, virtue, Porul, wealth, या statecraft, or Inbam, love. Aram, Porul, Inbam, love. Which of the following Tamil texts has been called Laghva Ved? तो कुरल को called Laghu Ved या Laghva Ved, little Ved, for its universal values, ethical teaching and secular spirit. Deals with human virtues, governance and social justice, applicable across all eras. Nandhi Kalambakam, medieval devotional poetry. Kalingattu Parani deals with war expedition by Jayam Kondar. Periya Purnam, Savit hagiography of Nayanmars. वैसे भी तबीयत इसकी. What does Vattakiruttal referred in Vattakiruttal referred to the in Sangam literature? A king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to death. इसको Vattakiruttal कहते हैं. Vattakiruttal was a heroic ritual suicide in Tamil tradition, where a defeated warrior or king would fast unto death as a form of atonement or honor preservation, mentioned in Purana Nuru and other Sangam works. अच्छा, Vattakiruttal king imply woman gods? नहीं. Learned assemblies. Sangam poets held gatherings but not related. Girls in field. Cultural practice but unrelated to this term. Who among the following was the author of Tamil Ramayana और रामावतारम? कंबन ने वो किया. कंबन 12th century CE wrote Ramavataram, also known as Kamba Ramayanam. It's Tamil retelling of Valmiki Ramayana, deeply embedded with bhakti themes. Consider the following statement: cultural history. Siddhas of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry. सही है. Siddh were part of Shiv Siddhant, influenced by Tantric and Yogic tradition. They were monotheistic, emphasized inner purity, and criticized ritual या idolatry. Famous Siddh अगस्त्य और तिरुमूलर. दूसरा, लिंगायत ऑफ कर्नाटक क्वेश्चन रीबर्थ एंड कास्ट. सही है. फाउंडेड बाय बासवन्ना 12th century. रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, थ्योरी ऑफ रीबर्थ, चाइल्ड मैरिज, और प्रमोट क्या किए? मोनोथिज्म. सिर्फ शिव भगवान की पूजा करना, शिव भगवान के लिंग की पूजा करना. विडो रीमैरिज मतलब, और विधवाओं का मतलब रीमैरिज हो. संगम लिटरेचर इज ए गोल्ड माइन. अच्छा देखिए, तमिल भक्ति लिटरेचर सच एज तिरुकुल्लर, रामावतारम और शीलपद्दिकम गिव insight into ethics, governance and culture. Arikamedu, Vattarikuttal and Siddh. Lingayat tradition links South Indian history with archaeology, philosophy and socio-religious. ठीक है. Which of the following dynasty with their related temple and cities? देखिए, गुप्ता, देवगढ़, ये ब्रिक टेम्पल है. दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ यूपी is one of the earliest surviving Hindu stone temples and belongs to Gupta 5th century CE. It reflects early North Indian temple. Chandela, Khajuraho. Chandela dynasty 10th to 12th century CE built 25 temples at Khajuraho. 85 बने थे लेकिन 25 ही सर्वाइव हैं अभी. These are the famous for their Nagar style and erotic sculpture. Kandariya Mahadev temple. Chalukya Badami. Pulkesin first founded the Chalukya dynasty with Badami Vatapi in Karnataka as capital. They constructed rock cut and structural
temple here. Pallav Panamalai. Pallav ruled Tamil Nadu and built temples like Kailasnath, Kanchipuram, and Talgiswareswar temple, Panamalai, in Dravidian style. Which of the following was a corporation of merchant in ancient India? To Manigramam. Manigramam was a powerful merchant guild in South India, active during Chola period. They engaged in foreign and inland trade, along with Nanadeshi and Ayavole guilds. मनीग्राम जो थे वो फॉरेन ट्रेड में भी थे, मतलब नाना देशी और अयवोले के साथ. मनीग्रामम मनीग्रामम मर्चेंट गिल्ड. चतुर्वेदी मंगलम ब्राह्मण सेटलमेंट, लैंड ग्रांट विलेजेस, उनको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था. परिषद, काउंसिल और असेंबली, यूजुअली एडवाइजर इन नेटी. अष्टदिग्गज, literally assembly of 8 poets of Krishnadevaraya court, not related to trade. अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के कोर्ट में जो मतलब वो थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था. एपिग्राफिक रिकॉर्ड फ्रॉम साउथ इंडिया. उत्तर मेरूर ऐहोल मेंशन मर्चेंट गिल्ड्स एज सेमी ऑटोनोमस बॉडीज. उत्तर मेरूर और ऐहोल के इंस्क्रिप्शन से. द बैटल ऑफ तकुल्लम was fought between Chola and Rashtrakuta. Battle of Tukallam 949 CE was fought between Rashtrakuta king Krishna III और चोला प्रिंस राजादित्य. चोला और राष्ट्रकूट के बीच में ये युद्ध हुआ था. चोल और राष्ट्रकूट. चोला और राष्ट्रकूट के बीच में बैटल ऑफ टुकल्लम फॉट बिटवीन राष्ट्रकूट किंग कृष्ण थर्ड एंड चोला प्रिंस राजादित्य सन ऑफ Prantaka first. Rajaditya was killed in this battle, marking setback for the Chola. North Chalukya had conflict later, but who eventually devastated the Chola dynasty? Malik Kafur. Malik Kafur, general of Alauddin Khilji, conducted expedition to South India in 1310 AD, defeating Yadavas, Hoysala and Cholas. Chola decline had begun in 1250 under pressure from Hoysala and Pandya, but Malik Kafur invasion marked the fatal blow. Muhammad Ghaznavi attacked northwest India only. Bakhtiyar Khilji destroyed Nalanda, focused on Bengal, Bihar. Muhammad Gauri fought to North India. Why was Urayur famous in Sangam era? Important trade center of cotton. Urayur, Tiruchirappalli. On Kaveri River, Urayur, Tiruchirappalli was known for fine cotton, called Koli or Varnam in the text. कॉटन को कोली और वर्नम कहा जाता था. एंड रिफरेंस्ड इन पेरिप्लस ऑफ एर्थेरियन सी एज ए फ्लोरिशिंग ट्रेड टाउन. उरैयूर या तिरुचिरापल्ली को कहा जाता था. स्पाइसेस एसोसिएटेड मोर विद केरला पोर्ट लाइक मुजिरीज. फॉरेन ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड टू जेनरिक. कॉटन ट्रेड वाज ए स्पेसिफिक फैक्टर. उरैयूर कॉटन, important trade center of cotton. Udyanjeral belong to which dynasty? Chera dynasty. Udyanjeral is an early ruler of Chera dynasty mentioned in Sangam text. Udyanjeral believed to have provided food for Mahabharat warriors, symbolizing generosity.
Pandya and Chola Sangam rivals of Chera. Satavahan based in Deccan, Andhra region. Chera king traded with Rome, Mujiri's port, and issues coin with Tamil Brahmi script. Issued coins with Tamil Brahmi script. ठीक है. Which river was lifeline of Pandya state? Vengi river. Pandya state. Vengi river Vaigai was a crucial for Pandya kingdom, with its capital at Madurai, which is located on its bank. Godavari Krishna Deccan rivers associated with Satavahan and Eastern Charka. Tungabhadra linked to Hoysala and Vijayanagar Empire. Pandya inscription refer to Vaigai irrigation tanks and canals key to agrarian prosperity. Temple architecture mapping match. Merchant guilds, Manigramam, Nanadesi, Ayavole are powerful trade corporation with foreign ties. Battle and decline. Tokallam marked the early Chola setback. Malik Kafur led the collapse. 1310 में. Sangam cities Urayur, cotton, Madurai cultural capital, Karur Chera capital. Vaigai was to the Pandyas what Kaveri was to Chola. कावेरी चोला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, वैगई पंड्यास के लिए. वेंगी या विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वेयर सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट? तो टोंडी और मुसीरी दोनों. टोंडी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे केरला, वेस्टर्न कोस्ट. पोर्ट मेंशन इन पेरिप्लस एर्थेरियन. मुजीरी या मुसीरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट इन मालाबार कोस्ट, मॉडर्न डे केरला. की फॉर इंडो रोमन ट्रेड. कोरकोई ईस्टर्न कोस्ट पांड्या पोर्ट. पुहर कावेरी पट्टिनम ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट ऑफ चोलास. कोरकई पुम्फुहर एंड मुचिरी वेयर नोन एज पोर्ट्स. कोरकई पुम्फुहर एंड मुचिरी. कोरकोई पांड्या पोर्ट्स फेमस फॉर पर्ल फिशिंग. पुहर Chola capital and trading port. Mujiris Chera port active in Roman trade. ठीक है. According to Sangam text, terms like Kon, Ko and Mannan were attributed to king. Kon generic term of king. Ko या Mannan rule or monarch in Sangam Tamil. थर्ड संगम वाज हेल्ड एट मदुरई. देखिए पहला संगम मदुरई में हुआ, लेजेंडरी एंड मिथिकल. सेकंड संगम कपादपुरम, लिटिल एविडेंस, कपादपुरम. थर्ड संगम हिस्टोरिकल हेल्ड इन मदुरई अंडर पांड्या पेट्रोनेज. प्रेसिडेंट नक्केरर अकॉर्डिंग टू द लेजेंड. नक्केरर थे. द सेज क्रेडिटेड विथ Aryanizing South India was Agast. Agast is regarded as father of Tamil literature, credited with bringing Vedic knowledge to South and composing early Tamil grammar. विश्वामित्र गायत्री मंत्र बनाया इन्होंने. वशिष्ठ वैदिक सेज अनरिलेटेड टू. संबंध इन नयनर संत. शिव भगवान को लेके थे. चालुक्य बादामी कैपिटल अंडर पुलकेशिन फर्स्ट एंड सेकंड. पल्लव कांचीपुरम known for temples like Kailas Nathar, Hers Kannauj, Harshvardhan. Northern Indian capital during his reign. Pandya Madurai capital and cultural hub during Sangam age. Mahendravarman first, Pallava power. Gopal, Pala dynasty founder. Mihir Bhoj, Pratihar ruler. Prantaka first, early Chola expressionist. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले पल्लव, फिर पाल, फिर प्रतिहार, फिर चोला.
महेंद्र वर्मन यानी कि महेंद्र वर्मन, पल्लव, फिर पाल यानी कि गोपाल पाल डायनेस्टी फाउंडर, मिहिर भोज प्रतिहार, फिर चोला प्रांत का फर्स्ट चोला। Which of the following pair state and its capital is not correctly matched? चेरा पुडुचेरी नहीं भाई, चेरा का वांची, चेरा कैपिटल वाज वांची नोन एज करूर और वांजी। पल्लव कांचीपुरम सही है। पांड्या मदुरई सही है, कैपिटल ड्यूरिंग संगम एंड मिडिवल पीरियड। चेरा पुडुचेरी नहीं। चोला तंजावुर सही है, राजा राजा फर्स्ट। होयसाला द्वार समुद्र हलेबीदु सही है, हलेबीदु। Arrange the Pallav ruler in correct chronological order. Mahendra Varman first, 600 to 630 CE started rock cut architecture. Narsingh Varman first, Mamallan defeated Pulkesin second at Vatapi. Parmeswaran first, फिर नंदी वर्मन सेकेंड, patronized learning and Tamil culture. Pallav chronology help understand temple evolution and conflict with Chalukya. अच्छा देखिए, चाइनीज ट्रेवलर हु गेव अकाउंट ड्यूरिंग चालुक्य रीन, तो वो कौन थे? मतवालिन। मतवालिन मेंशन द डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल रिलेशन बिटवीन चाइना एंड चालुक्य इंडिया। फाहिन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, हुएन सेंग हर्षवर्धन के टाइम में, इत्सिंग विजिटेड ईस्टर्न इंडिया। मतवालिन चालुक्य के टाइम आए थे। विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया? चालुक्य। Dominantly in Deccan, Badami and Kalyani Rajput ruled northern region like Rajasthan. Gupta pan North Indian power. Maurya Patliputra Bihar ruled vast northern India. King who sent minister to Kasi to suppress animal cruelty? Chalukya king Kumarpal. Chalukya king Kumarpal. Influenced by Jain scholar Hemchand, promoted ahimsa, banned animal slaughter. Chalukya king Kumarpal, influenced by Jain scholar Hemchandra, promoted ahimsa, banned animal slaughter. King who sent minister to Kasi to suppress animal cruelty? तो चालुक्य किंग कुमारपाल, इन्फ्लुएंस्ड by Jain scholar Hemchandra. सिद्धराज जयसिम्हा उनके प्रेडिसेसर थे, लेस इंक्लाइन टू जैनिज्म, कोलोतुंगा चोला किंग, जयसिम्हा कश्मीरियन सोवियत किंग, हेमचंद प्रबंधस एंड जैन क्रॉनिकल उन्होंने लिखा है, हेमचंद ने प्रबंधस। कुमारपाल भेजे थे। कैपिटल ऑफ कदम किंग्स वनवासी, वनवासी या बनवासी इज ए प्रेजेंट डे कर्नाटक, अर्ली कैपिटल ऑफ कदंग डायनेस्टी, फाउंडेड बाय मयूर शर्मा 4th century से। कदम किंग वनवासी। तंजौर चोला, कांची पल्लव, बादामी चालुक्य। वनवासी कदम का वो था। इम्पोर्टेंस सीपोर्ट और काकतिया किंगडम, मोटूपल्ली आंध्र प्रदेश, मेजर पोर्ट यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड विद चाइना, अरब and Southeast Asia. Visited by Marco Polo, who praised its prosperity. Machilipatnam, important during Vijayanagar and Qutub Shahi. Nellore, inland town. Chalukya versus Pallava, known for intense conflict and architectural rivalry. Vatapi versus Kanchipuram. Jain kings like Kumarpala show religious influence on policy. Port like Motupalli, Erikamedu, Mujiris were part of Indo-Roman and Indo-Chinese maritime. Dynasties in Deccan, Kadam, Hoysala and Kakatiya are critical for understanding cultural diffusion. A king of South India sent an ambassador to kingdom in Rome in 26th BC. To which dynasty did he belong? To Pandya. According to Roman sources like Natural History by Pliny and Peripulus of Arthurian Sea, a Pandya king sent an ambassador to Emperor Augustus, Rome in 26 BC. Madurai, capital of Pandya, had flourished trade link with Greco-Roman world. This reflects early Indian diplomacy and maritime connectivity. Chola, their major influence began under Raja Rajavan and Rajendra I.
चेरा स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज विथ रोम सी ने अच्छा हु स्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर चेरा चेरा डायनेस्टी रूलिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे केरला एंड वेस्टर्न तमिलनाडु established flourishing trade with the Roman Empire during Sangam period. Arikamedu near Puducherry and Mujiris, modern Kodangallur, where significant ports, Roman coins, amphorae and glassware have been discovered in these areas. चेरा ने बनाया कुशन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एशियन एंड सिल्क रोड कॉन्टैक्ट वेस्टर्न शक रूल्ड वेस्टर्न इंडिया वाकाटाका सेंट्रल इंडिया डायनेस्टी known for patronage of Ajanta. Meenakshi Mandir is located in Madurai. Meenakshi Amman temple is one of the most iconic temple of South India located in Madurai. Originally built by Kulsekhar Pandya and later expanded by Nayakas, especially Thirumalai Nayak, associated with Sangam literature and seat of first and third Sangam and seat of first and third Sangam. It is a marvel of Dravidian architecture, famous for its tall gopuram and sculptures. मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन मदुरई reinforced अच्छा सिंबल ऑफ तमिल ठीक है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई कैपिटल ऑफ पांड्या वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश बालाजी टेम्पल एट तिरुपति वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुमाला महाकाल मंदिर उज्जैन वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स बेल्लोर मठ हावड़ा वेस्ट बंगाल रामकृष्ण मिशन हेडक्वार्टर Bellore Math, Havada. The mighty gateway found in the temples of South India are called Gopurams, or ornamental entrance towers of South India Dravidian temples, prominent during Chola Pandya and Vijayanagar Empire. Highly decorative and towering structure that represent temple architecture in India. The temple, especially during Chola period, emphasized Gopuram structure. Shikhar seen in Nagar North Indian temples. Devala generic term for temple. Mandapam pillared hall inside temple used for ritual not gateways. तो ये हम लोगों का संगम पीरियड भी खत्म होता है. थैंक यू बाबा.